Good morning, student. So, my name is Rahul Dubla. Today I am going to discuss second part of classification units and periodicity. मुझे थोड़ा देर हो गया ये वीडियो अपलोड करने के लिए ड्यू टू माय टेक्निकल इश्यूज I was unable to upload my videos regularly. So I hope next time I will upload regularly. So all of you watch my regular videos. Okay. So last date. Yes. Last year we completed 4 to 5 topics on classification and periodicity. So today we are going to discuss on electron gain enthalpy. Yes, electron gain enthalpy. Okay, electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? So how you will find out which element shows more electron gain enthalpy, which element shows less electron gain enthalpy. So this electron gain enthalpy also denoted by del Eg. Eg is electron gain enthalpy. Okay. So if you go along the periods, electron gain enthalpy increases. Electron gain enthalpy means how fast one electron gain electrons. So say this one is a कोई एटम का ऑर्बिट स्ट्रक्चर है जो सेंटर में न्यूक्लियर होता है साइड में ऑर्बिट होता है. So if you try to remove one electron from the valence shell, so this electron requires some energy for breaking the interaction force between the nuclei and electron. Clear? Effective, that is effective nuclear charge. This is called effective nuclear charge. So I have some interaction forces there. So first you break this interaction force. After breaking this interaction force, you are able to remove this electron from this valence shell. Is it clear? So this electron requires some energy. This is known as ionization enthalpy. Ionization enthalpy or ionization potential. After that, this electron is excited. So if you try to put this electron into the valence shell of any elements, so this electron is excited. So this electron has more energy compared to this valence shell, because all valence shell of elements always ground state compared to excited electron. Clear? So this electron is excited, so this one has more energy, this valence shell is lower energy shell, so this one remove its own energy, that is electron gain enthalpy. So this electron first lose its electron excitedness, then this one enter into the ground shell or valence shell. Clear? So this energy is known as electron gain enthalpy. So first electron gain enthalpy always negative in nature. Clear, people? Okay. So first electron gain enthalpy is negative in nature. So what happens in case of second electron gain enthalpy? So let us consider A. This one gain one electron, that is minus Eg. After then F minus, if you try to put another electron into the valence shell of A minus ion, so what happens? So both the negative sign report to each other. No interaction force is there. Clear? So in that case, you will provide some energy from the outer side to minimize the repulsion force between the ions and electron. So that's why this one require energy. And this one is A 2 minus. Clear, people? So this one require much more energy when you try to put second electron into the ions. Clear? So first electron gain enthalpy always positive in nature and negative in nature. Second electron gain enthalpy always positive in nature. Okay. Next.
this electron gain enthalpy or electron affinity, this one measure the nature of electronegativity of atoms. Much more electronegative, that is this one easily gain electron, that is this one highest electron gain enthalpy. क्लियर? कोई एटम में अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो मतलब उसके एंटर जो उसको आउटर मोस्ट शेल में एंटर करने से पहले उनका एनर्जी लूज करना पड़ता है, तो जो जितना फास्ट एनर्जी लूज करे वो इतना फास्ट एंटर कर सकते हैं. क्लियर? सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दिस इज द हैलोजन सीरीज फ्लोरीन क्लोरीन bromine iodine. So in generally fluorine is topmost electronegative in nature, so this one has highest electron affinity. But in practical found that chlorine has highest electron gain enthalpy, electron affinity. For what? Due to effective nuclear charge. Effective nuclear due to effective nuclear charge. Clear? So in case of fluorine chlorine bromine iodine, chlorine has highest electron gain enthalpy. Next topic. Or another things, in case of halogen family, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So along the period, electron gain enthalpy increases. So ionization potential also increases if you go along the periods. So in case of halogen family is much more stable, so they don't try to take electron or try to lose electron. So left to right electron gain enthalpy also increases, that is fluorine is topmost electronegative, then chlorine is negative, so this one is highest electron gain enthalpy. But after that this series helium, neon, argon, krypton, xenon, this one has much more electron positive energy required. This is not negative, this one is positive electron gain enthalpy is required. And increases, that means left right increases, that means not negative value, this one is positive value. Helium, neon, argon, krypton has much more positive value in first case of electron gain enthalpy due to their stabilized configuration, because they are stable according to duplet rule and octet rule. This one follows duplet rule, then follows duplet rule, and this one follows octet rule. Clear, people? Next, shielding effect or scanning effect. Shielding effect or scanning effect. What is shielding effect? Shielding effect means this effect found in basically F-block series. Okay, so shielding effect basically found in which series? F-block series. So in F-block series, what happened? Basically D are F-block. If you consider in D-block series and if you consider in F-block series, this is F, this one is D block. So what happened? In D block series, orbital, there is subshell present in outer sides of the shell, but in case of F block series, this is present in the inner side. So what happened? In inner side, there is interaction force is more with nuclear charge. Here interaction force is less due to the more distance. Clear? So due to the less distance, interaction force less. Interaction force is here. Interaction force is more due to the less distance. Interaction force is less due to the maximum distance. So what happened here? Actually, in case of F-block series, so due to the less distance, due to the more interaction force, this orbital, this electron try to shift into the
nuclear charge, or they try to synchronize their size. Clear? So due to this, what happened? Some orbital also there. So they also try to get here. So ultimately, what happened? Some races, some competition is there. Okay. So due to this competition, this orbital repel to each other. So repulsion between the inner orbital with outer orbital is known as shielding effect or staining effect. So this one only found in Havelock series due to their inner orbital reason. Clear? So Havelock is an inner orbital element. Inner orbital element. Clear? Or inner orbital atoms. So this series found in, or this interaction force found in Havelock series. Clear? So due to this, their size not regularly decreases. Not regularly decreases means if you go along the periods left to right, their size regularly decreases. But if you go along the period in Havelock series, their size irregularly decreases. Why? Due to the lengthened contraction and actinide contraction. लैंथेनाइड सीरीज में ये जो स्कैनिंग इफेक्ट है ना, ये भी होता है प्लस एक्टिनाइड सीरीज में होता है, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन है दोनों में, एफ इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू दिस एफ इलेक्ट्रॉन that is atoms f orbital, that is this is inner orbital, so due to the inner orbital shielding effect is there, so due to their shielding effect their size irregularly decreases. Clear? This thing is known as lengthened contraction or actinide contraction. Clear? And shielding effect also known as scanning effect. Clear? Next, penetration effect. This one is penetration effect. Penetration effect. S orbital is other than P, then D, then मतलब एटम जो ऑर्बिटल का साइज है ना, वो इंक्रीज होने के साथ साथ पेनिट्रेशन इफेक्ट भी थोड़ा कम होता है। ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। more penetration effect, that is more electronegativity, that is this one require more ionization potential also. So I have in S orbital ionization potential is more compared to P, then D, then F. So that means penetration effect decreases, ionization potential also decreases. Clear? Next, diagonal relationship. Next, diagonal relationship. What is diagonal relationship? Actually, diagonal relationship, if you just consider group 1 and 2, lithium, sodium, potassium, beryllium, magnesium, calcium. Okay, I think what also you consider boron, aluminum, gallium, carbon, silicon, germanium. So if you go left to right size decreases. If you go top to bottom, size increases. So compared to beryllium, lithium is larger size. Compared to beryllium, magnesium also larger size. So both are almost equivalent to nearest size. Clear? So another things, their electronegativity increases. That is, lithium is more electropositive than beryllium. Top to bottom electronegativity decreases. That is, magnesium is more electropositive than what? Beryllium. So therefore, lithium and magnesium also equivalent to each other. So they are equivalent. This is known as diagonal relationship. Clear? तो यहाँ पर diagonal relationship खत्म है। उसके बाद IUPSC very much important topic। इस बार भी एक क्वेश्चन नीट में है। आप लोग नीट के क्वेश्चन 2022 का देख सकते हैं। क्या है?
IUPAC आप लोग 3 टाइम्स मिलेगा आप लोग IUPAC। यहाँ तो एक बार मिल जाएगा प्लस क्लास 12 का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ पर एक बार मिल जाएगा प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगा। मैं पार्ट पार्ट करके कर देता हूँ, बहुत इजी लगेगा, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं लगेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कैसे 1 के लिए दैट इज यूनिक होता है ना, अन 0 का मतलब नील होता है, नील 1 दैट इज 2 का मतलब बाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा नहीं क्वाड, यहाँ पर क्वाड होगा क्वाड, 5 का मतलब पेंट, 6 का मतलब हेक्स, 7 का मतलब सेप्ट, 8 का मतलब ऑक्ट, 9 का मतलब इन या इन होगा इन, क्लियर, दैट का मतलब इन। सो व्हाट यू 119, how you write this electronic configuration, sorry IUPAC, this is 1 मतलब an, again 1 मतलब again an, 9 का मतलब in, लास्ट में yum, IUM, yum कौन होता है, तो दैट इज an in yum, this is IUPAC. So how derive its symbol? Symbol derives U E. So U E or U E is the symbol. Clear? This is the symbol. Clear people? Next, very important, easy, इस बार भी मिला था एंट्रेंस, तो another 108, what is 1 का मतलब आन, 0 का मतलब नील, 8 का मतलब ऑक्ट, लास्ट में याम, क्लियर है? तो आन नील ऑक्ट याम, तो एक साथ में लिखना है, इसमें गैप नहीं चाहिए, एक साथ में लिखना पड़ेगा, आन नील ऑक्ट याम, सिंबल तो एक ही चीज है, सिंबल सेम प्रोसीजर, दैट इज U and O, बस फिनिश, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एटॉमिक आयनिक साइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एंट्रेंस में बहुत बार आ चुका है, डिफरेंट एंट्रेंस में, जीमेल में, नीट में, वो सब मिल चुका है इस क्वेश्चन। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस जस्ट इस नंबर को अलग करना, नंबर लाइन -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, say N3 minus O2 minus F minus sodium plus magnesium 2 plus aluminum 3 plus, that is positive charge increases, positive charge increases means their size decreases, clear? So left side size decreases, clear? Left side their size decreases, that is radius, ionic radius also decreases, clear? Ionic radius also decreases. Next,
Van der Waals radii, internuclear distance. Next topic is internuclear distance. Internuclear distance. What is internuclear distance? Internuclear distance means आपके पास बहुत सारे एटम, हर कोई एटम के पास न्यूक्लियस तो होता है, सेंटर होता है, क्लियर? सो दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्लियर? दिस इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ओके? दिस इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. So if two atoms come together and reduce their distance and overlap to each other, form bonds. This is known as covalent bonds or sharing bonds. Clear? Okay. So this is the nucleus. They form bond. The two nucleus. This one also form bond. Clear? This is known as internuclear distance. Clear? So this internuclear distance, if you divide it two parts, that is radii. The radius between the internuclear distance is known as covalent radius. Covalent radius. That means after bonding, the radii between the nucleus is known as covalent radii. So both the nucleus also interact to each other. So this interaction force is known as Van der Waals attraction force. Another term, Van der Waals attraction force. What is Van der Waals attraction force? This is very important topic. Very important. I will repeatedly discuss this topic in your different chapter. This Van der Waals attraction force also enhances the boiling point, enhances the melting point, enhances the atomization enthalpy also. Clear? Also hardness of elements. This Van der Waals attraction force. So this Van der Waals attraction force means the interaction force. This is a weak force, but this will play major role or vital role on your chemistry syllabus. This Van der Waals attraction force. Van der Waals attraction force means the attraction force between the two orbitals or two atoms. Clear? So this attraction force also reduce the distance between the molecules or atoms. So I hope this distance is known as internuclear distance. So the radii of these two nuclei is known as Van der Waals radii. Van der Waals radius. Van der Waals radius. Actually covalent radius वो आफ्टर बॉन्डिंग जो रेडियस है ना उसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका जो हाफ पार्ट जो रेडियस उसको कहते हैं कोवेलेंट रेडियस और कोवेलेंट रेडियस. बट बिफोर बॉन्डिंग जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्डिंग तो नहीं हुआ, इसलिए न्यूक्लियस के बीच में दूरी भी ज्यादा होगा. तो इसलिए उन लोगों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के जो हाफ पार्ट दैट इज 20% 50% दैट इज रेडियस इज नोन एज Van der Waals radii. Clear? So this is very important topic. What is Van der Waals radii? What is covalent radii? What is Van der Waals attraction force? So next is acidic character and basic character of oxides. Acidic and basic character of oxides. Very important topic. P ब्लॉक में मिल जाएगा आप लोगों को, S ब्लॉक में मिल जाएगा, DR ब्लॉक में मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ. सेम थिंग, इतना ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, सिंपल से पढ़ लीजिए आप लोग. वही नीट में काम आएगा, वही बोर्ड में काम आएगा. ऑक्साइड्स, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, acidic or basic strength of oxides. Clear? So say if you consider
NO2, N2O4, N2O5, NO3, NO3 सिर्फ NO सेम एटम का ऑक्साइड। सो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीजन स्टेट +2, इसका ऑक्सीजन स्टेट +4, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट +5 है। सो जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट, more positive oxygen state, that is more acidic in nature, that is talking about acidity strength increases, acidity increases, clear people? That is positive sign increases, that is acidity strength also increases. This one for homoatomic oxide, this one for homoatomic, not to same atom का oxide मिलेगा तो, otherwise not, clear? So what happen in case of if you consider different atoms, B2O3, CO2, B2O3, CO2, N2O4, O3, etc. So these elements go left to right. This is group 13, this is group 14, this one is group 15, this one is group 16, clear? So if you go left to right, acidic strength increases, that is acidic strength increases, that is acidic strength increases, clear? Okay, next if you go along the group, that is say N2O4, P2O3, arsenic, S2O3, clear? So if you go along the group, electropositivity decreases, electropositivity increases, that is acidic character decreases. If you go along the group, there is acidic character decreases, clear? आपको ये बुक में भी मिल जाएगा, इतना सारे बहुत सारे एग्जाम्पल का थोड़ा देख लीजिए, बस एक ही फॉर्मूला फॉलो कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन, okay, बस I hope this one is last topic finish. आपके जो classification of elements and their properties, this chapter is finished. जो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो आपके एंट्रेंस और स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं चाहिए, थोड़ा एक दो टॉपिक बाकी है वो मैं आपको एस ब्लॉक, जो DRI ब्लॉक, जो P ब्लॉक, अलग अलग से जो चैप्टर है ना इसमें डिस्कस करने वाला, तो इसलिए यहाँ पर एक दो टॉपिक मैं जानबूझकर छोड़ के आया, जो टॉपिक रिपीटेडली included in your another chapter, that is S block, P block and DRI block. Okay, so I hope is it clear. नेक्स्ट यहाँ का जो आप लोगों को होमवर्क क्या करना है, घर में क्या पढ़ाई करना है, आप ABC बुक पीजिए, दिनेश भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों बुक भी अच्छे हैं, इसमें मैं ABC ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ABC, तो आप दिनेश भी पढ़ सकते, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ABC में भी है, दिनेश में भी है, दोनों बुक में, और त्रिपुरा बोर्ड के कोई और बंगाल में जो छात्रा और छाया प्रकाशनी, कोई बात नहीं, कोई भी बुक फॉलो करो, सब जितने सारे बुक है सब में सेम एक ही चीज़ होता है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, प्लस पीछे में आपको NCERT का जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन विद आंसर। सो आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, उसका आंसर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सेट करते हैं, जो नीट सिलेबस जो NCERT है ना, आपको जो NT वाले तो क्वेश्चन करते हैं आपको नीट की, तो वो आपकी सिलेबस फॉलो करते हैं, आपको ग्रेजुएशन की सिलेबस नहीं चाहिए, आपको इतना डेप्थ नहीं चाहिए, जाने की जरूरत भी नहीं, आप जितना जरूरत है इतना ही पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, रिपीटेडली पढ़ लीजिए, बहुत सारा रिवीजन अगेन रिवीजन कर लीजिए,
अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप प्रीवियस 30 या 34 ईयर से क्वेश्चन लीजिए, देख लीजिए, इसमें आपका सिलेबस से बाहर होता है क्या देख लीजिए, ग्रेजुएशन का लगता है क्या वो भी देख लीजिए। आउट ऑफ 45 क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत टॉप लेवल होता है, IIT बच्चों के लिए हुआ है 2-3 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 45 2-3 क्वेश्चन बात छोड़ दीजिए, 2 क्वेश्चन और छोड़ दीजिए, दैट इज 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए, 40 क्वेश्चन मिल जाए तो आई होप बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसमें तो आप फिजिक्स में भी लीजिए, बायोलॉजी में तो आपको अच्छे से मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज योर आई वाज कंप्लीटेड ऑन अकॉर्डिंग टू योर नीट सिलेबस, नॉट नथिंग लेस। क्लियर? तो नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग तो जो चैप्टर है मैं वही अपलोड करने वाला हूँ, तो आप लोग ठीक से मेरा वीडियो देख लीजिए, प्लस सब्सक्राइब शेयर दोनों भी कर लीजिए, प्लस कमेंट भी कीजिए। मेरा वीडियो थोड़ा कैमरा में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो और 1-2 दिन मेरा जो टेक्निकल इशू है वही चलेगा 2-1 दिन, आई होप विदिन 1 वीक आई विल कंप्लीट, आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। So after then you will get proper video. I hope साउंड क्वालिटी इज इम्प्रूव, बट वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम हो गया आज, उसका कैमरा में थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, तो इसके लिए मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम हुआ। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, प्लस मैंने जो बोला था उसी तरह वही स्टाइल फॉलो कीजिए, बुक उठाइए, बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, बुक से अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी टीचर बुक से ऊपर नहीं होता है, आप बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लस टीचर की गाइडेंस लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। क्लियर? थैंक यू, जय हिंद।